Why is it that 33 years later, all of us here feel that there has been no diminution in our sense of anger, in our sense of disgust, in our pain? Because we know that the quest for justice has remained utterly unfulfilled. We know that not only have those who planned and orchestrated the murder of more than 3,000 citizens in Delhi, Kanpur, Bukhara, Indore, Bhilai, we often forget all the other places where people were murdered. All the politicians who were involved, and we need not mince any words here. Farah Naqvi spoke about how this was an attack, a murderous attack by the state against its own people. And there is no other way to describe what happened in 1984. And all of this has been amply documented. I remember as a student, I was abroad at the time in 1984. Those were the days before internet, of course, even before news television of the kind that we have today. And I remember as Indian students in London anxiously listening to the radio, scanning the newspapers to get some sense of how this kind of a terrible crime could have been committed in the capital city of India. The newspapers offered no answers, and when we got copies of Who Are the Guilty by PUDR and PUCL, when we saw copies of the Citizens Report of Justice Tarkunde and others, which for the first time brought into the public domain the guilt and complicity of ministers of the Union of India, senior leaders of the Congress Party, we then began to understand, when we could see documented in the form of eyewitness accounts, testimonies, the shocking role of the police, not just in abdicating any responsibility to protect people, but actually playing a role in many cases of direct to kill people. That's when we understood. And as this information became wider, more widely available, in many ways, the India of 1984 December or the India of 1985 or 86 resembles the India of today. The same sense of, same willing suspension of disbelief. People want to believe anything they want other than that the men at the top could be capable of such horrible crimes. So those of you who lived through that period and who began to raise your voice for justice in 85, in 86, in 87, were banging a head against a brick wall. Because those against whom the appeals for justice were directed were themselves the guilty ones. And everybody knew this, but most people were unwilling to say so. So the fact that there's been no justice, the odd policeman may have been suspended, the odd butcher of Kalyanpuri may have been sentenced to death, but these were mere foot soldiers. Would the victims of the Nazi Holocaust have had any sense of closure if the only people caught were some 88-year-old Auschwitz guard, when the masterminds of the Holocaust were scot-free? That would never have happened. But today we live with this reality. But there is another reason for us to remember this year after year and to not forget, which is that if you forget history, those who forget history are condemned to repeat it. This also we know through painful experience. We realized barely 3 years after the genocide of Sikhs in Delhi, when the provincial armed constabulary in Uttar Pradesh murdered over 200 people, Muslims in Malyana and Hashimpura near Meerut.
We realize that we are condemned to repeat history when in 1989, more than 1,000 people were massacred in Bhagalpur. And then again in 92, 93, after the Babri Masjid was demolished and murderous attacks took place in Bombay and other cities, which took the lives of, again, more than 1,000 people. And we were condemned to repeat history again in 2002, when more than 1,000 innocent Muslims were killed in Gujarat, and then again in Muzaffarnagar in 2013. And I dare say we will be condemned to repeat these kinds of crimes again and again and again, unless this battle for justice, which didn't begin before 84, 84 was perhaps arguably the worst kind of massacre or genocidal attack that we had seen. There was Nelly before that, there were other cases. But the manner in which official complicity became manifest is a lesson for all of us that unless we deal with that monster, unless we ensure that the guilty of 84, and I don't mean simply the Narasimha Raos or the Rajiv Gandhis or the H.K.L. Bhagats or Sajjan Titlers. What we saw in November 84 was the enactment of official complicity. We saw a crime committed by the state, by the institutions of the state. So individuals come and go. Many of the most guilty people of that era are dead and gone now. And it's an eternal shame for India that they were never put on the dock and put on trial and held accountable. But the institutions that they led remain intact. They remain as capable of wreaking the kind of violence that they did in November 84 on the Sikhs of Delhi and other cities. They remain as capable of doing that today on the direction or whim of the political masters, whoever they may be. Today, the theme of our discussion is right to justice. And there is a reason why 33 years later, this right to justice remains unfulfilled. And the reason is very simple. Because the massacres that took place in November 84 would not have been possible without the institutionalized riot system that was a reflection of the ability of the ruling party of the day to command the police to do whatever it wanted, the authority of the ruling party of the day to ensure that once a crime is committed, that all traces can be erased or covered up, so that even if a case is registered, even if the victims struggle for justice, they will break their head against a brick wall. And it is this institutionalized system that we have to fight against, that we have to challenge, because if we don't, as we have seen in 2002 or at other moments in time, this system, in one way or the other, is used by whoever is in power against whichever victims they want to target. There is the paradox here of political parties. We all know which party was in power in November 84, the Congress. So to expect that the Congress party would deliver justice was, well, foolish. But since then, Janata Dal, BJP, in Delhi and at the center, BJP has been in power. Vishwanath Pratap Singh, Inder Gujral, Deve Gowda, Atal Bihari Vajpayee, Charan Singh, Chandrasekhar. Not a single one of them was concerned or bothered about delivering justice. And you have to ask yourself why that was the case. And the reason is because to deliver justice means that you have to, at one level, politically, it would have made a lot of sense.
If your rival party is the Congress party, then delivering justice to the victims of 84 would have meant condemning the Congress party to political oblivion forever. Why would Atal Bihari Vajpayee not have wanted to do that? Why doesn't Narendra Modi want to do that? Because if you want to do that, you have to hold the police accountable. You have to unearth those lists of 19, 20, 30 names. You have to ask what happened to them, whether they're retired or not. You have to proceed against them. And if you proceed against them today for crimes that they did in defense of the Congress party in 84, in your mind you will have a doubt कि कल अगर मुझे पुलिस से काम करवाना पड़े जैसे मैंने 2002 में करवाया तो क्या ये लोग मेरा साथ देंगे कि नहीं? मैं अर्ज कर रहा हूं कि हकीकत यह है कि आप सत्ता में हैं, आप कभी नहीं चाहेंगे, कम से कम ये लोग नहीं चाहेंगे कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी हो, कि पुलिस अगर अपना ड्यूटी नहीं करता आप उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे. They want a police force that is a handmaiden of the political parties. They want a bureaucracy that is a handmaiden of the political parties. They want judiciary that will also not rock the boat. ऐसे ऐसे रिटायर्ड जजेस पाल के रखते हैं, आपने उनको कमीशन पे लगा दिया, 10 साल 12 साल 15 साल लग जाते हैं. ये कोई मजाक? और कमीशन जब रिपोर्ट आता है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे आप एक्शन ले सकें. बाबरी मस्जिद 1992 में, उसके बाद लिबरहान कमीशन बिठाया गया. लिबरहान कमीशन का रिपोर्ट 2012 में आया, 20 साल के बाद. ऐसे जजेस आप ढूंढ के चुन चुन के आप निकालते. रंगनाथ मिश्रा को आपने चुन चुन के निकाला कि भाई आप ये रिपोर्ट तैयार करें. So these kinds of people, these kinds of institutions, it is my submission that these ruling parties, these prime ministers, even when they have a compelling political interest, 84 को लेके राजनाथ सिंह जी, सुषमा जी, मोदी साहब ने क्या क्या नहीं बोला. यहां पे जिक्र, यहां पे पैम्फलेट है 2014 में जब राजनाथ सिंह जी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने जेनोसाइड लफ्ज इस्तेमाल किया, जो एक सही लफ्ज है, बिकॉज देयर इज नो अदर वर्ड टू डिस्क्राइब द काइंड ऑफ टारगेटेड किलिंग दैट टुक प्लेस ऑफ द 6th of November 84. लेकिन 4 महीने पहले क्या हुआ पता नहीं. आप लोग, आपने से कितने लोगों ने पढ़ा होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट. जब कनाडा में रेजोल्यूशन पास हुआ उनके पार्लियामेंट में, शायद ऑटवा, ऑन्टेरियो लेजिस्लेचर में जब रेजोल्यूशन पास हुआ टू कंडेम द जेनोसाइड ऑफ सिख्स, यू हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ विच राजनाथ सिंह एंड सुषमा स्वराज आर अ पार्ट सेइंग कि वो जेनोसाइड नहीं है. तो सच क्या है? जब वोट मांगने के लिए आप बंगला साहब या पता नहीं किस गुरुद्वारे में वो प्लाकार्ड लगा हुआ है, वहां पे आपने फोटो अपना खिंचवा लिया जहां पे जेनोसाइड आप कहते हैं कि जेनोसाइड हुआ है. लेकिन जब आप पावर में हैं तो जेनोसाइड लफ्ज आप भूल जाते हैं, क्योंकि अगर आप जेनोसाइड की बात करेंगे तो जेनोसाइड, उस लफ्ज के तहत जो जेनोसाइड कन्वेंशन है उसकी आपकी जो लीगल जिम्मेदारियां हैं उसको तो आप कबूल नहीं करना चाहते. क्योंकि जैसे हमने कहा कि आप इंसाफ देना नहीं चाहते. तो महज एक खिलवाड़ लोगों के जज्बातों के साथ यही हो रहा है. एंड आई थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल, disgusting elements of Indian politics, that political parties pay lip service to an issue which should be at the core of our concerns as Indians. And how in the capital city of India could 3,000 innocent, it still shocks me sometimes कि कैसे हो गया ये? How did we put up with it? Why aren't more people more upset and angry about it? It always bothered me. I'm being very honest here. As a student, when I moved back to India in 95,
it used to disturb me how the country can put up with this. Why are more people not more agitated? And you have these politicians who make false statements, false declarations. For them, announcing some money is the one way that they want to improve their credentials. I have a few minutes left. I just want to quickly run through the issue of lessons. Every act of massacre or genocide of the kind we saw in 1984, there is a pattern. 3 parts. First is the demonization or vilification of a community. Second is acts of killing. Third is the cover-up. और हर ऐसे इंसिडेंट में यही पैटर्न आपको नजर आएगा. आप 84 की याद करें, किस तरह से मैस मीडिया में दहशतगर्दी के सवाल को लेके सिखों को निशाना बनाया गया, आम सिख को एक तरह से मुल्क का दुश्मन करार दिया गया. दंगों के दौरान भी जिस तरह से अफवाहें फैलाई गई, दंगों के बाद बाकायदा इश्तिहार निकाले गए चुनाव के टाइम में, जहां पे इस चीज को और प्रमोट किया गया, वो हम अच्छी तरह हमको याद है. जिस तरह से सिख्स को टारगेट किया गया फॉर कम्युनल प्रोपेगेंडा. You could have the largest newspaper of the country, Times of India, writing that it is the 11th hour in the time for the Sikhs. ये कोई भाषा होती है? ये कोई जुबान होता है? And then, of course, the massacre with the complicity of the police. I won't repeat myself. रूलिंग पार्टी का उसमें हिस्सा, पुलिस का हिस्सा. और तीसरा, कवर अप. And to my mind, people often say कि आप लोग राजीव गांधी को कोसते हो, आप लोग नरेंद्र मोदी को कोसते हो, सबूत निकालो कि कत्लेआम में उनका हाथ था. और हम कहते हैं कि भाई ऐसा शायद सबूत हमको नसीब नहीं है, ऐसा हमको मिलेगा नहीं. लेकिन गिल्ट इनका हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज से साबित करेंगे, वो ये कि आपके शहर में आपके अपने शहरी मारे गए और कातिलों पे मुकदमा चलाने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया. इसी से आपके गिल्ट का जो है अच्छी तरह से हम इसको फिक्स कर सकते हैं. क्योंकि माना कि अगर आप इनोसेंट थे, आपको मालूम नहीं था, आप अभी पीएम बन गए, अभी सीएम बन गए, आपको इतना इल्म नहीं है पॉलिटिक्स का, प्रशासन का, कत्लेआम हो गया, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप फौरी तौर पे कार्रवाई लें, केसेस रजिस्टर करें, जस्टिस दिलवाएं? So, whenever you see reluctance on the part of a minister or a prime minister to prosecute the guilty, that tells you that they are guilty. I don't need to find a document which says Rajiv Gandhi ordered this killing or Narendra Modi did that or whatever. To my mind, you are the PM, you are the CM. You had a responsibility to stop the violence. Chalo, you failed, but you had a responsibility to identify and punish the guilty. And you not only failed, you sabotaged. You ensured that bogus cases were registered. You ensured that the way FIRs were drafted, no trial or no conviction could take place. गुजरात में आपने VHP, अभी एक और केस निकला है हरियाणा में, जिस लड़के को रेल में पीट पीट के मारा गया, जुनैद, वहां पे पता चल रहा है कि प्रोसिक्यूटर कातिलों की हिमायत कर रहा है. और ये बात जज साहब ने पॉइंट आउट किया. तो ये हकीकत है. दिस इज कवर अप. सो टुमारो इफ सम चीफ मिनिस्टर सेज कि भाई जुनैद के साथ जो हुआ मुझे पता नहीं, मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो, हम कहेंगे भाई आपके लीगल ऑफिसर किस तरह से उसकी बचाव कर रहा है. और ये खबर निकलते ही आपने उसको सैक नहीं किया, वो इस्तीफा दे रहा है. So this cover-up is, to my mind, a crucial part, the most crucial part of the evidence. To conclude, I'd like to say
that there are three broad lessons. Don't allow politicians to build their careers by claiming that they are going to take justice in this case or are going to, they condemn genocide. बहुत सारे ऐसे मिसाल हम देख चुके हैं. मेहरबानी करके इनकी बातों में, मतलब अगर कोई अच्छी बात करता है ठीक है, उनको इंकरेज कीजिए, लेकिन वी शुड नॉट बी फूल्ड इनटू थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू एक्चुअली डिलीवर. दे विल डिलीवर ओनली इफ दे इंसिस्टेड, इफ पीपल इंसिस्ट. आज भी मैं कहता हूं कि जेनोसाइड का जो सवाल है, कितने लोगों ने वापस जाके राजनाथ सिंह जी और सुषमा स्वराज जी से कहा कि भाई आपने तो वहां पे कुछ और बोला और आपकी सरकार कुछ और कह रही है, तो सच क्या है, जवाब तो दीजिए. सो आई थिंक दैट being aware of what these politicians are is the first broad lesson that we need to have. Second, किसी भी हालत में सियासतदानों को मौका मत दीजिए एक to play one set of victims against the other. मुझे अभी भी याद है 84 के दंगों के बाद, 84 के कत्लेआम के बाद, 85, 86, 87 में जब हम लोग एज एक्टिविस्ट, एज स्टूडेंट्स, हम लोग इस बात को लोगों के बीच में उठाते थे, तो कांग्रेस या और मतलब जो फिरका प्रस्त जिसका माइंडसेट था उन दिनों में, वो कहते भी जी पंजाब में हिंदू मारे जाते थे तब आपने कुछ नहीं कहा. ये कोई बात है? पंजाब में अगर दहशतगर्दों ने हिंदुओं को मारा है तो दैट इज कंडेमेबल, वी डिमांड जस्टिस. बट टू से बिकॉज दे आर विक्टिम्स ऑफ वन काइंड वी कैनॉट रेज अ वॉइस फॉर विक्टिम्स ऑफ द अदर इज कंप्लीटली फ्रॉडेड इन लॉजिक. और आज भी जब 84 की, क्योंकि अब तो पॉलिटिकल जुमला बदल गया है, जिन लोगों ने 84 के बाद एक तरह से मैसेकर्स को डिफेंड किया, अब वो लोग कहते कि नहीं 84 बहुत खराब था, लेकिन 2002 की बात मत करना. 2002 की बात करोगे तो कहेंगे जी 84, आप 84 की बात करोगे जी कश्मीरी पंडित. और इस तरह से पंडित को सिखों को मुसलमानों से लड़वाते लड़वाते इंसाफ किसी को नहीं देंगे. जो लोग कश्मीरी पंडितों के सफरिंग पे बड़े बड़े दुकान जो चला रहे हैं, आप सत्ता में रहे अब 3-4 साल होने को हैं, आपने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? लेकिन उनका नाम आप फजूल में आप घसीट ले आते हो जब भी बात चलती है जस्टिस की. तो ये जो सियासत है विक्टिम्स का, प्लेइंग वन विक्टिम अगेंस्ट द अदर, ये बहुत ही सिनिस्टर और डेंजरस सियासत है. इस चीज को भी पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि जो डिमांड फॉर जस्टिस है, हमारा डिमांड है कि ऑल विक्टिम्स, कत्ल किसी भी पार्टी ने किया हो, किसी भी मजहब के लोगों ने किया हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके विक्टिम्स को एक दूसरे से मत लड़वाइएगा. डिमांड फॉर जस्टिस इज इनडिविजिबल. एंड फाइनली, जो मैंने कहा कि डीमोनाइजेशन जो हो रहा है, जो हुआ था 84 के, वी नीड टू बी अवेयर एट डिफरेंट मोमेंट्स इन टाइम. जिस तरह से मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है, अलग अलग कम्युनिटीज को निशाना बनाया जाता है, आज भी वो दौर चल रहा है हमारे देश में. आज भी कोशिशें की जा रही हैं बंटवारे की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए. और इस बंटवारे की सियासत के एंड में क्या है वो हम अच्छी तरह जानते हैं, कत्लेआम. अगर हम इस चीज से बचना चाहते हैं, अगर हम सही मायने में 84 के विक्टिम्स को रिमेंबर करना चाहते हैं, उनको जस्टिस देना चाहते हैं, तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज ramifications, all of this wider politics, because only in recognizing the kind of dangers which we confront and in raising our voice in defense of the rights of all people can we pay true homage to the victims of the 84 genocide. Thank you very much. Thank you very much, Sidharth ji, for such a comprehensive presentation.
राजीव गांधी जी ने केवल जस्टिस की तो बात बहुत दूर, ही ट्राइड टू जस्टिफाई द जेनोसाइड बाय सेइंग जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। नारंग साहब। Mr. President, distinguished members of the panel, ladies and gentlemen, आज मैं इस मंच से 3 अलग अलग कैपेसिटीज में बोल रहा हूं। 31 अक्टूबर 1984 की रात को मैं रिंग रोड के ऊपर स्कूटर पर सवार था। 37 साल के उस वक्त मेरी आयु थी। यूनिवर्सिटी में रीडर था और मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। हिंदू स्कूटर स्टैंड के रक्षक ने मुझे बचाया। सो आई एम अलाइव। उसके बाद दिस इज माय फर्स्ट कैपेसिटी। सो जो इन बच्चों ने किया, आप में से बहुत सारों ने भी भुगता, देखा और कुछ ने बाद में सुना और समझा। दूसरा, दिसंबर 1984 में सिख फोरम की स्थापना की गई। जनरल अरोड़ा साहब की अध्यक्षता में, मैं उसके एक फाउंडर मेंबर्स में हूं और 33 साल से हम इस जस्टिस की मांग करते आए हैं और अक्सर इस प्रोग्राम को मैं कंडक्ट करता रहा हूं। इसलिए मेरे लिए ये एक सिख फोरम का इशू है, सिख इशू है। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं और मेरे 2 बेसिक जो एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन हैं वो है पंजाब पॉलिटिक्स एंड माइनॉरिटी इश्यूज। इसलिए जो बातें आज फरहान ने और सिद्धार्थ ने कही हैं, उन तीनों को मैं, उन दोनों को इस सारे पर्सपेक्टिव में लेकर आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बात दोनों ने बहुत स्पष्ट कर दी है, उसमें कोई लंबा चौड़ा कहने को रह नहीं गया। बात थोड़ी सी रेपिटेशन के लिए, ताकि इस पर्सपेक्टिव बनाने के 2-3 बातें जो सामने आई हैं। एक कि 84 हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ, उससे पहले बहुत कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद भी हुआ और होते रहने की पूरी संभावनाएं हैं। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट थिंग विच हैपन बिफोर 84 हैपन, आफ्टर 84 हैपनिंग, and there is every likelihood of these things being continuing in the given framework। एक बात ये स्पष्ट हुई। दूसरा, जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाई डिलेड जस्टिस, व्हाई डिनायल ऑफ जस्टिस। वरदराजन ने कहा कि पूछते हैं जी इसके लिए प्रूफ क्या है। देखिए, अभी तक फरहान ने 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट रेज की हैं कि हम जस्टिस को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक, पनिशमेंट टू द परपेट्रेटर, जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए, और दूसरा, अलग अलग भाषाओं में कोई उसको रेपरेशन कह रहा है, कोई कंपनसेशन कह रहा है, कोई मुआवजा कह रहा है, वगैरह वगैरह बात। पहली चीज, जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो पनिशमेंट हमारे सिस्टम में जो है वो कौन से लॉ के अंदर है? वी ट्रीट पनिशमेंट एज ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ कॉमन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो हमारा आईपीसी है, सीआरपीसी है, उस कॉमन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंडिविजुअल मरता है, इंडिविजुअल मारता है। बात समझने की कोशिश कीजिए। उसमें किसी कम्युनिटी को नहीं मारा जाता, उस सिस्टम में स्टेट नहीं मारती, पॉलिटिकल पार्टी नहीं मारती। आइडेंटिफिएबल इंडिविजुअल होने चाहिए, दे आर द परपेट्रेटर्स। आइडेंटिफिएबल विक्टिम होने चाहिए कि ये मरे हैं और इनको इसने मारा है। तब 302, 304 जो ये केस बनता है। जब इस तरह का केस हो तब भी हम इसी तरह से देखते हैं। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि हमारी पुलिस बहुत ईमानदार है, हाइपोथेटिकल नहीं कह रहा, मान लीजिए दे वांट टू डू जस्टिस। अब 3000, 4000, 5000 आदमी मर गए तो पुलिस क्या करेगी?
ईमानदार पुलिस क्या करेगी? सबसे पहला काम FIR रजिस्टर करो। किसके कहने पे करो, उसमें क्या लिखो, किसके खिलाफ लिखो,